इन दिस वीडियो हम लोग बहुत डेप्थ में शिल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बिज़नेस को समझेंगे, उसकी एक एक प्रोडक्ट लाइन को समझेंगे और मैनेजमेंट ने अभी तक क्या परफॉर्मेंस दी है और आगे परफॉर्मेंस का आउटलुक कैसा है इन द कमिंग ईयर्स। विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। सो एज़ यू नो कि मेरी आदत है थोड़ी सी कि मैं हर चीज़ को समझाने से पहले आई गो इन टू द वेरी बेसिक्स एंड देन वी बिल्ड द फाउंडेशन फ्रॉम देयर। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम इन दिस केस। तो हम एकदम बेसिक से समझेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, ठीक है, और उसका जो प्रोडक्ट है उसका एक्चुअली में वो काम कैसे करता है, ठीक है। सो शिल्चर इज़ बेसिकली कंपनी दैट मेक्स ट्रांसफार्मर्स, और ये दो तरीके के ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विच इज़ मेजॉरिटी ऑफ देयर रेवेन्यू, एंड देन दे ऑल्सो मेक इलेक्ट्रिकल एंड telecom transformers. So first of all, what is a transformer? To understand what is a transformer, you need to understand what is voltage. To understand what is voltage, you need to understand what is electricity, right? So ekdam basic सी बात let's just cover first. Electricity is nothing but flow of electrons, right? And voltage is the pressure. It's the electric pressure. तो जितना मान लो एक पाइप है पानी का, तो जितना वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही पानी ज़्यादा तेज़ फ्लो करेगा। तो वो जो पानी फ्लो कर रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, और वो पानी का जो प्रेशर है दैट इज़ वोल्टेज, राइट? So voltage is like electric pressure. It's what pushes the electrons through the wire, just like water pressure pushes water through a pipe. This can either use to power things like light bulbs, fans, motors, etc. And in this case, it's the raw transfer of electrons as a form of energy. So electricity is therefore used पंखा चलाने के लिए, motor चलाने के लिए, air conditioner चलाने के लिए, things like that. The other thing which you might not know is that it can also be used to send a message, right? So audio, video, etc. by using the changing voltage patterns as a signal. The pattern of voltage here can be used as a form of message which can be communicated. So जो हम mic use करते हैं like a microphone, और जो मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं विच एडजस्ट द वोल्टेज एट वेरी 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 लो लेवल्स, which helps in transferring messages. So anyway, I'll get to that in a minute. So let's understand this better. So think of it this way. Imagine a battery is like a water tank. Voltage is the pressure from the tank. Current, which is the electric current, electricity, is the flow of water, and wires are the pipes. So voltage is the force that makes electricity move. So I'm hope if you can just pause this video and want to look at the slide again. I really want to clear your concept of what is voltage. Once you know what voltage is, then it's very simple to understand what transformers are. Okay. तो एक पानी का टैंक है, उसमें जो प्रेशर है जिससे वो पानी एकदम धर से यानी तेज़ी से निकलता है, सो दैट प्रेशर इज़ वोल्टेज एसेंशियली, राइट? एंड दैट फ्लो ऑफ वाटर इज़ इलेक्ट्रिसिटी. So voltage is the force that makes electricity move, right? That's what voltage is. Now transformers are used in the electric grid, यानी जो पावर स्टेशन है जहाँ से पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, दैट माइट बी अ थर्मल प्लांट और अ सोलर प्लांट और अ विंड फार्म और अ हाइड्रो प्लांट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए टू अदर सिटीज़, टू अदर कंट्रीज़, to other substations, you need transformers, right? So why do you need transformers? That is what we are going to talk about here. So big picture, moving electricity from power plants to your home, which can be far far away, right? So electricity travels a long journey. It is generated at power plants far away, then it is transmitted over long distances, like through big towers and long wires. If you travel through the train or if you travel through the highway, you will see huge towers, और वो इलेक्ट्रिसिटी लेके जो है वो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स लेके, they're there. Then three is distributed locally to homes, shops, and factories. Okay, so where do transformers fit in all this, right? So transformers are basically crucial at multiple points because they change voltage levels to suit different stages of the journey. This is very important. Every stage of the journey of electricity transfer requires a different voltage. A transformer can either increase the voltage, making it a stronger push,
It is called a step up transformer, or it can decrease the voltage, making it a softer push. ओके, सो बेसिकली वोल्टेज चेंज करने का काम ट्रांसफार्मर्स करते हैं. इंक्रीज करना होगा वोल्टेज, यू नीड अ ट्रांसफार्मर. डिक्रीज करना है वोल्टेज, यू अगेन नीड अ ट्रांसफार्मर. So let's go through this step by step. Step one is step up transformer at the power plant. Electricity is generated at moderate voltage, right? Let's say 11,000 volts. लेकिन उसको दूर तक ले जाने के लिए वो वोल्टेज काफ़ी नहीं है. यू नीड मोर प्रेशर टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल ओवर सच लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट? So, but long distance transmission needs very high voltage, right? So you need almost 2,20,000 plus voltage, which is also needed to reduce energy loss, just like using high water pressure to move water far with less waste. पानी को भी दूर तक अगर पहुंचाना होगा, यू विल इंस्टॉल अ वेरी हाई प्रेशर मोटर जो बहुत हाई प्रेशर से पानी को पाइप्स के थ्रू भेजे. अगर प्रेशर लो होगा तो पानी दूर तक नहीं जा पाएगा, राइट? सो अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेसिकली इंक्रीजेज द वोल्टेज. दैट इज व्हाट इट डज. Then step 2, transmission lines carry high voltage electricity. So high voltage means lower current, which means less heat loss. This makes transmission more efficient over hundreds of kilometers. Step 3, before electricity enters cities, a step down transformer reduces the voltage to a safer level. अब जब शहर के अंदर वो बिजली घुस रही है तो उतने हाई वोल्टेज पे घुसेगी तो नुकसान हो सकता है, बिकॉज दैट्स टू मच वोल्टेज. सो देन यू नीड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो मेन ट्रांसमिशन लाइन से जो डिस्ट्रीब्यूशन का सब स्टेशन है वहाँ उस वोल्टेज को कम कर दे. ओके, सो देन देयर ऑल्सो यू नीड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. एंड फाइनल, जो आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा होता है, एकदम आपके घर के सामने लाइक इलेक्ट्रिसिटी पोल होगा और समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे ट्रांसफार्मर होगा. सो द लास्ट ट्रांसफार्मर, the box on an electric pole or underground, reduces voltage again to just 220 to 240 volts for your home. तो घर में आपको और लो लेवल पे वोल्टेज चाहिए. सो इसकी एक एनालॉजी बहुत अच्छी यहाँ पे है कि इमेजिन वाटर पाइप्स अगेन. यू हैव हाई प्रेशर वाटर कमिंग फ्रॉम अ बिग सिटी पाइप, but your house pipes are small and can't handle that pressure, they would burst. So you install a device that lowers the pressure to a safe level for your home. That device is like a transformer for water. In electricity, a transformer does the same thing for voltage, कि वो उसका voltage कम कर देता है, step down transformer. So in summary, power plants make electricity, transformers boost the voltage, which is a step up transformer. Electricity then travels long distances. Then transformer reduces voltage down, that's a step down, and then you get the safe electricity in your home. तो ये तो हो गया आपका पावर ट्रांसफार्मर्स. हमने शुरू में बात की थी, लेट मी गो बैक टू दिस स्लाइड, कि दे हैव पावर ट्रांसफार्मर्स के अलावा दे ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम ट्रांसफार्मर्स. तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम ट्रांसफार्मर्स हैं, ये क्या करते हैं. ओके, सो कमिंग बैक, सो हाउ डू ट्रांसफार्मर्स रिलेट टू सिग्नल्स लाइक ऑडियो एंड वीडियो. तो टेलीकॉम ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो बेसिकली दे हेल्प इन मेंटेनिंग सिग्नल्स. तो ये अब एकदम से कन्फ्यूजन होता है कि अब ये क्या बात हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी तक तो बात समझ में आ रही थी, अब ट्रांसफार्मर्स का सिग्नल्स में क्या रोल है, ऑडियो और वीडियो में क्या रोल है, राइट? सो इसको भी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. सो व्हेन वोल्टेज चेंजेस ओवर टाइम इट कैरीज इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एन ऑडियो सिग्नल, a microphone converts sound waves in your voice into tiny changes in voltage, right? So louder sounds, bigger voltage. So the voltage wave represents the sound, right? Similarly, video signal, a camera converts light patterns into voltage variations. These voltage tells the screen what to show, brightness, color, etc. Right? So here you can look at an example of what I mean ki electricity or voltage is used to represent signals or audio signals. So signals out of audio sources is represented by voltage upon time graphs. So यहाँ पे जैसे जैसे आपकी आवाज़ चेंज हो रही होगी, the frequency and magnitude and amplitude of your voice is changing, so the voltage is changing accordingly, right? So here the voltage or the pattern of voltage change is basically the signal that is recorded and transmitted. तो उस वेरिएशन को, यानी उस वोल्टेज चेंज के पैटर्न को सेव करना
और उसको ट्रांसमिट करना और उसको रिसीव करना, उसके लिए भी आपको ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए होते हैं बेसिकली. So the pattern of voltage change is the signal, right? And just like tapping patterns in Morse code can carry a message, voltage patterns can carry sound, images, and data. How does this connect to electronic signals? Sometimes signals are at very, very tiny voltages and need to be boosted, like microphones needing a louder signal. A transformer can increase the voltage. Other times, before sending signals over long wires, you can transform the voltage to make it travel better and safer. And at the receiving end, like speaker or your phone, you might transform the voltage down again to the right size. तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का पिछला एग्जाम्पल था, यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर्स वही काम कर रहे हैं, बट हेयर दे आर ऑपरेटिंग एट वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, वेरी वेरी स्मॉल voltage levels and very very delicate frequencies, to basically instead of raw energy transfer करने के बजाय हम यहाँ voltage को as a signal transfer और receive कर रहे हैं. So a super simple one liner: a transformer acts like a voltage adjuster, making sure the electrical pressure is just right for the next part of the system. तो चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो या टेलीकॉम ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर का काम एसेंशियली यही है. ओके, सो just a summary. So, signal, audio, telecom transformers help with signal clarity. They help with safety and compatibility. They are found in phones, audio gears, telecom systems, and they focus on signal transmission. And they handle milliwatts, yani very, very, very tiny grades of signals. और ये कंपैरिजन टेबल है पावर ट्रांसफार्मर्स वर्सेस सिग्नल और टेलीकॉम ट्रांसफार्मर्स. तो मेनली इनका काम होता है चेंज वोल्टेज, और ऑडियो ट्रांसफार्मर्स भी चेंज वोल्टेज करते हैं, बट देयर पर्पस इज नॉट द ट्रांसमिशन ऑफ electrical power, rather it is signal clarity, safety, and compatibility. Power transformers are found in home stations, power stations, homes, near different factories, because you need transformers, you need electricity in factories, etc. टेलीकॉम ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन फोन्स, ऑडियो गेट्स, एक्सेट्रा. यहाँ पे बड़े पावर्स होते हैं ऑब्वियसली, किलो वॉट्स, यहाँ पे मिली वॉट्स. Power transformers focused on power delivery, whereas telecom transformers are focused on signal transmission. Now, in this slide, basically जो उनके जो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, विच इज़ वन एंड सेम कैटेगरी ओनली, उसमें भी पावर और डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस होता है. ठीक है, सो डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि जहाँ पावर जनरेट हो रहा है और वहाँ से पावर स्टेशन से आपको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिसिटी ले जानी है, वहाँ पे यू नीड ट्रांसफार्मर्स ऑफ मच हायर कैपेसिटी, जो उस हाई वोल्टेज को मैनेज कर सकें. सो यूजुअली वो जो बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं विच आर ऑपरेटिंग एट हायर देन 33 किलो वॉट रेंज, दे आर पावर ट्रांसफार्मर्स. वेयर जो आपके घर के पास और शहर के पास जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स. ठीक है, साइज एंड कैपेसिटी ऑब्वियसली वो पावर ट्रांसफार्मर्स आर मच लार्ज, एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जो आपके घर के पास छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, दे आर मच स्मॉलर. So this is from their website. So they have power transformers up to 132 kilowatts, right? This is from their website. You can also visit the website and have a look. This is their distribution transformer, which is just 33 kilowatts. So you can see पावर ट्रांसफार्मर साइज में भी बहुत बड़ा है, और वोल्टेज में भी दे आर गोइंग अप टू 132 किलोवाट्स, वेर एज द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज जस्ट 33 किलोवाट्स, जो ऑलमोस्ट वन फोर्थ द साइज, right? Then in electronic and telecom transformers, they have these different kind of transformers. You can pause the video and go through this in depth, but basically everything that we have talked about so far. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इनका पावर ट्रांसफार्मर्स हैं, देर आर उसके भी और अलग अलग वेरिएशंस हैं. ठीक है, लाइक इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स, जो इनका एक बहुत मेजर प्रोडक्ट है, जो ये एक्सपोर्ट करते हैं in different parts of the countries. Most big chunk of their revenue comes from inverter duty transformers, जो सोलर एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं. फिर हाइड्रो ट्रांसफार्मर्स, जो हाइड्रो एनर्जी के लिए, जो पानी से जो एनर्जी जनरेट होती है उसके लिए. सो शिलचर की वन थिंग यू नीड टू नोटिस कि दे आर नॉट जस्ट इनटू ट्रांसफार्मर्स, दे आर स्पेसिफिकली विद फोकस ऑन ट्रांसफार्मर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड by renewable energy like solar and wind and hydro.
तो ये जो इनके तीन प्रोडक्ट्स हैं, सोलर ट्रांसफार्मर, विंड ट्रांसफार्मर्स एंड हाइड्रो ट्रांसफार्मर्स, दीज आर देयर स्पेशलिटी, जो बाकी इंडिया की कंपनीज उस लेवल पे और उस क्वालिटी पे नहीं प्रोड्यूस कर पाती है जो शिलचर जिस पे करता है। इसीलिए शिलचर का भी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ देयर फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफार्मर्स। Then they have diversified application, right? स्टील, विंड एनर्जी, हाइड्रो। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑयल एंड गैस और स्टील से और इन सब से क्या मतलब। बेसिकली जो अलग अलग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको अपनी फैक्ट्री के लिए अपना ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। आप ये समझिए कि आपका जो मोहल्ला है, आपका जो घर है, उसमें लेट्स से 15-20 अपार्टमेंट्स हैं, तो उस 15-20 अपार्टमेंट के लिए एक ट्रांसफार्मर लगता है बिल्डिंग के सामने। तो जो एक फैक्ट्री है which takes more energy than hundreds of apartments, more energy than thousands of apartments, obviously they will need their own set of transformers, right? So कोई सीमेंट प्लांट है, शुगर प्लांट है, ऑयल एंड गैस प्लांट है, तो उसको अपने अपने खुद के set of transformers चाहिए, चाहे step up transformers or step down transformers or all sorts of transformers. So that is basically what Shilchar provides. And here we can see in their customer list some of the biggest names in the industry are their customers, right? So ABP India, it's a blue chip company, right? Blue Star जो कि AC बनाते हैं, Larsen and Turbo, Siemens, Suzlon Energy, Tata Consultancy Service, Voltas Electric, General Electric, Philips. So all these major companies are basically Shilcher's clients. So this just shows how established they are in the market. Global footprint, so they are in more than 15 international markets over 5 continents, right? ये उनकी पूरी जो है list है. So they are in USA, Chile, Canada, Iceland, Romania, Saudi, Oman, UAE. So huge list of clientele that you can see, right? Moving on, हेयर यू कैन सी कि इनका जो एक्सपोर्ट मिक्स है ये 2021 जहाँ से इनकी ग्रोथ बेसिकली शुरू हुई, जो अभी इमीडिएट मतलब जो हम लोग हाइपर ग्रोथ देख रहे हैं ये 2021 से शुरू हुई है। तो वहाँ इनका जो एक्सपोर्ट था वो सिर्फ 19% था, और वो बढ़ के ऑलमोस्ट हाफ हो गया, हाफ से भी ज़्यादा हो गया, 56%। और अभी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, सो राइट नाउ इट्स एट 43%। So now let's look at its profit and loss, right? You can see for the last 5 years, the sales have been compounding at 54%, which is crazy. And the profits have been compounding at 151% for the last 5 years. So the sales have basically gone from 100 crores to 600 crores, and the profit has gone from 6 crores to 147 crores. That's how crazy the growth has been in this company. And right now, we just completed the last quarter of 2025, FY 2025. So the results have been good, or because of that, there has been a recovery in the stock price also. So we can see that in terms of performance, it's absolutely, very aggressive, fast growing company. Looking at the balance sheet, you can see that the total assets have increased from 100 crores to almost 500 crores over the past 5 years. And most of this increase has come from increase in reserves. तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब इट्स अ वेरी कैश रिच कंपनी, ठीक है। और हम बोरोइंग्स देखें तो ज़ीरो हैं, विच इज़ बेसिकली मीन इट्स अ ज़ीरो डेट कंपनी, सो दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। फिक्स्ड एसेट्स हैव ऑल्सो बीन इंक्रीजिंग ऑब्वियसली. The only concern right now is that capital work in progress is zero, which means right now, as of today, they are not putting additional capacity. But that is something we are going to discuss in the coming slides. कि इन्होंने अभी अभी नई capacity अपनी डाली है. So we'll talk about that. In terms of ratios, debtor days is around 130 days. तो यहाँ पे थोड़ा सा debtor days इनके बढ़े हैं, और उन्होंने अपनी कॉन कॉल में समझाया भी है कि रिसीवेबल्स क्यों इतने बढ़े हैं. Basically they have a line of credit for all of their receivables, and they like to let the money be. मतलब ऐसा नहीं कि फ़ौरन पैसा लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं, सो दैट उनको अगर देर से पेमेंट जो मिल रहा है उस पर उनको इंटरेस्ट का पैसा भी मिले. दैट्स जस्ट देयर स्ट्रैटेजी, नथिंग टू वरी अबाउट. The most crazy thing over here is ROCE. ROCE is 71% right now. I don't think I've seen any company with such a high ROCE. So ROCE has increased from 13% to 71%. So crazy ratios. So you can see that they have recently increased their capacity from 4,000 to 7,500 megavolt amperes, almost double, or increase their capacity by almost 80%, right? Which they have done from August of 2024.
और अभी भी इनके पास इतनी ज़मीन है, दे हैव सफिशेंट लैंड पार्सल टू पोटेंशियली 3x द कैपेसिटी इंक्रीज, यानी यहाँ से भी 3 टाइम्स और कैपेसिटी वो बढ़ा सकते हैं विदाउट प्रोक्योरिंग एनी एडिशनल लैंड, राइट। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। सो हेयर यू नीड टू नो कि FY 25 में 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था और अब एकदम से कम हो गया। रीज़न फॉर दैट इज़ कि जो उनका जो ये नया प्लांट आया है, जो नई कैपेसिटी आई है, वो उसका फुल यूटिलाइजेशन सिर्फ लास्ट क्वार्टर में ही हुआ है। ओके। तो अभी जो यूटिलाइजेशन, जो पूरी कैपेसिटी है, उसका फुल यूटिलाइजेशन सिर्फ लास्ट क्वार्टर में हुआ है। उसके पहले वाले क्वार्टर्स में वो कैपेसिटी पूरी तरीके से लाइव ही नहीं हुई थी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग अ लिटिल लोअर नंबर ओवर हेयर। They have had two major capacity expansions, one in 2018 and one recently, and now they're planning for further capacity expansion. So this is from their investor presentation, the most recent one, which came out in April 2025. So it says we have achieved full capacity utilization ahead of schedule, as demonstrated by our strong Q4 performance. Initially, we anticipated reaching this milestone by FY 26. However, on a run rate basis, we have accomplished this in Q4 itself, राइट। तो जो इन्होंने सोचा था कि अगले साल तक कैपेसिटी पूरी फुल यूटिलाइज करेंगे, वो लास्ट क्वार्टर ही में इन्होंने पूरी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करना शुरू कर दी। आवर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, अंडरपिन्ड बाय हेल्दी ग्रॉस एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स, राइट। The demand outlook continues to be the demand outlook continues to be positive across both domestic and export markets. तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे आर वेरी बुलिश ऑन देयर प्रेजेंट कंडीशन इन द मार्केट, और अभी भी इनको जो डिमांड है वो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। करंटली देर आर नो रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांसफार्मर्स फ्रॉम इंडिया टू US। एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि द US माइट इम्पोज टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो अभी तो खैर 90 डे का पॉज चल रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसफार्मर्स पे कोई टैरिफ नहीं है specifically, right? Given the robust demand environment, there is potential for further capacity expansion. तो इन्होंने 4,000 से 7,500 पे ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी एक्सपैंड की है, एंड नाउ दे आर सेइंग कि डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दे कैन फर्दर एक्सपैंड द कैपेसिटी. For now, our immediate priority is to optimize existing operations and consolidate recent gains. Although we have not yet finalized any additional investments, I want to assure you that Shilchar is fully equipped to capitalize on emerging opportunities. Now इनके कॉन कॉल से कुछ हम स्निपेट्स देखते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस ईयर दे आर टारगेटिंग 750 crores in top line. So just to give you sort of some reference, इनका जो अभी रेवेन्यू चल रहा है वो 623 चल रहा है, जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है। तो ओवर दिस दे आर बेसिकली सेइंग कि दे आर एक्सपेक्टिंग 750 crores ऑफ रेवेन्यू. So then they say 750 is just 20% kind of growth. So they say हाँ बस 20-25% हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. So but we'll see कि यूजुअली ये मैनेजमेंट ऐसी है जो थोड़ी कंजर्वेटिव गाइडेंस देती है, एंड दे काइंड ऑफ एंड अप आउट परफॉर्मिंग देयर गाइडेंस. So then they say, I mean, 20-25% is a conservative figure, which I'm saying. But if you look at our track record, we have always beat the projection which we have shared at the beginning of the year, right? We will do our best. So even if you look at this, तो लास्ट क्वार्टर रेवेन्यू वॉज 232 crores, यानी अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, दैट्स अ रन रेट ऑफ 928 crores. सो इवन तो कुछ क्वार्टर्स में ज़्यादा होता है, कुछ क्वार्टर्स में कम होता है. अगर उस सीजनैलिटी को हम वी टेक दैट इनटू अकाउंट, स्टिल दे शुड 920 नहीं करेंगे तो एटलीस्ट 850 crores तो रेवेन्यू करना चाहिए, विच इज़ अ 36% ग्रोथ ओवर FY 25. तो ये लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू है, ये पूरे साल का रेवेन्यू है, राइट. सो इस क्वार्टरली रेवेन्यू के हिसाब से अगर 928 का करोड़ का रेवेन्यू ना भी करें, तो एटलीस्ट 850 crores तो करना चाहिए. सो अगेन आई थिंक दे कैन बीट देयर मैनेजमेंट गाइडलाइंस फ्रॉम हेयर. Now capex plans. So they say ki, so the people in the con call, they ask, the analyst ask ki, are you planning for more capex and capacity expansion? So they say we are already working, and what kind of capacity we want to increase, everything
They're still deciding on that. We're going a bit slow because we are a bit conservative, and we want to make sure that any expansion we do has to be manageable and sustainable. But the plan is already going on, and it will soon be announced. Another thing is कि ये हायर किलो वोल्ट क्लास ऑफ ट्रांसफार्मर्स को बेसिकली केटर करना चाहते हैं। तो अभी तक जो लो और मिड क्लास है ट्रांसफार्मर्स का, उसी में शिल्चर ऑपरेट करता है। जो एकदम हाई क्लास है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज, उस पर ये ऑपरेट नहीं करते, विच इज़ बेसिकली द मोस्ट लूक्रेटिव पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, जहाँ मार्जिन सबसे ज़्यादा हाई होते हैं, रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। वहाँ अभी तक शिलचर नहीं था, बट नाउ द मैनेजमेंट इज सेइंग दैट दे आर कंसिडरिंग हायर एम वी एंड हायर के वी क्लास ऑफ द ट्रांसफार्मर, विच मीन्स यहाँ से रेवेन्यू की ग्रोथ और मार्जिन्स यहाँ से और इम्प्रूव हो सकते हैं। सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ द ओवरव्यू ऑफ शिलचर टेक्नोलॉजीज़। सो मैंने एकदम आपको डिटेल में समझाया कि वोल्टेज क्या होता है, ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, और शिलचर इसमें से क्या क्या बनाता है, कैसे बनाता है, किस इंडस्ट्री के लिए बनाता है, अभी तक इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, all those things. Just a disclaimer: we do hold this stock in our portfolio, and we bought it at lower levels from the current level. So anyway, so if you want that, we also kind of have a look at your portfolio and suggest stocks for investments, you can reach out at the details given in the slide.